microcontroller. Okay, in last class we have finished with the features of 8051 microcontroller. This is very important question from your board point of view. You need to write minimum 8 features in your exam. Mostly 4 marks question is there in your board exam. So any 8 features you can write from these all features. So first you know that it is 8-bit ALU, and I have added 2 more features. Since it is 8-bit ALU, so it can process 8-bit data simultaneously. Similarly, it has 8-bit data bus, as well as it has 16-bit address bus that we have already discussed. Since it has 16-bit address bus, so what is the main function of address bus? To generate addresses, and it tells the memory capacity of your microcontroller also. If it is 16-bit, means 2 raised to the power 16. That means 65536. That means 64 KB. That 64 KB memory you can access. But internal, if you see the second point, internal, it has only 4 kilobyte. As you know, in microcontroller everything is on the chip, with limited amount of RAM, ROM, serial ports, IO controls, ALU, everything on a single chip. So this is also like your 40 pin IC, like your 8085 microprocessor, same structure. जैसे 8085 का किया था, तो this one more feature you can add, that it is a 40 pin DIP IC. So 3 more features you can add in this, that it has 40 pin DIP IC, just like 8085 microprocessor, 20 pin one side and 20 pin another side. So on that IC you can have 4 KB internal ROM, okay, and 128 bytes, not KB, only 128 bytes RAM. So by total you can access how much? 64 KB. So this 64 KB means 4 KB you are accessing as ROM. But if you want, you can access more 60 KB by connecting external memory. So here it is written addresses 64 KB of program memory. Means you can use either RAM or ROM. Okay, any one you can use for expansion. So if you want that your program area is small, you cannot accommodate that permanent coding in this 4 KB, so you can install or you can put 64 KB externally. 60 KB की कोई IC नहीं आती. It is always multiple of 2. So you will get 4 KB internal plus 64 KB external. See, but total it is 68 KB, right? But maximum how much or how many location you can access? Only 64 KB. Okay, so it is in the combo, that 4 KB plus external 60 KB that you can access. Okay, this is one way. So on this pin diagram, you have on this pin diagram you have one पिन दैट इज एनेबल एक्सेस करके मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था एनेबल एक्सेस, तो उससे आप बता सकते हैं कि यू आर यूजिंग दिस मोड वेयर यू आर कंबाइनिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी. ओके, and you can use fully completely external memory एंड यू लीव दैट इंटरनल मेमोरी. तो उसका एक एडवांटेज है कि जो आप इसमें क्या होगा कि
some part of your code in the internal memory and some part of your code in external memory. So if you want to transfer something, so you need to access both the memory. But in this case, your full code is in the external memory, so it is easy to access. So this way you can have two options, means maximum you can access 64 KB of memory, internal or external. So internal it is 4 KB, and if you want you can external 60 KB along with this 4 KB, or independently 64 KB external memory. So that's why it is written 4 KB. Here you can write internal memory, and here you can write addresses 64 KB bytes of program memory. Program memory is your ROM, permanent memory. And same way, if you think that user area should be, or according to your application you need more user area, then instead of ROM you can upgrade that as RAM. Understood? But anyone you can upgrade, because 16-bit address can address 64 KB combination. Then you have 111 instruction. Total you less, like in your 8085 you had 74, here you have 111 instruction set. एंड देन फुली फीचर्ड सीरियल पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स भी मिलेंगे वेयर यू कैन कनेक्ट योर डिवाइसेस. एंड here the clock frequency is 12 megahertz, and in your 8085 it was 3 megahertz. And here you have two external interrupt, means you have two hardware interrupt. In 8085 you had five hardware interrupts. So these are the features that you can use. These are the features that you can use, or that you can write in your exam. Okay, so this we have done in last class also. Now next it is family of 8051 microcontroller. So this these are the different uh, microcontroller from this series or from this generation only, or you can say Intel family. So first जो थी family, that was 8048, 8049 or 8050. So you can say this is first generation of 80 Intel microcontroller family. इसके बाद 8051 जो हम second generation में consider करते हैं. तो 8048, 4950 में कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है फॉर दिस वाज फॉर दीज थ्री माइक्रो कंट्रोलर about the RAM and ROM of these microcontroller. 3 marks question, 1 mark for each, कि 8048 में कितना RAM और ROM लगता है. So here you can make a table or you can write like this, or simple lines maybe you can write, but it is better if you write like this. The ROM and RAM, so you can see every, if you are able to learn one, then you can write for 8049 and 8050 also, because हर बार ये double हो जाती है. ठीक है, capacity will be double as you move from 8048 to 8050. So you can see and you can read that the memory size doubles in each case. 8048 support 1 KB of internal ROM. So here it is 1 KB. In 8049 it is 2 KB, and here in 8050 it is 4 KB. So every time it is double. And same way RAM also, RAM is your user area, 64 bytes internal RAM. So here in first case you are having 64 bytes. Just remember, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ KB कर देते हैं और मार्क्स चले जाते हैं. Only 64 bytes, and in 8049 you have 128 bytes, and in this you have 256 bytes. So this way, this is your 3-mark question. Sometimes there it is in your board exam. Write the memory capacity of 8048, 49 and 8050
microcontroller. So is this way you can write, and sometimes features are there. So this is main feature of these microcontroller, and along with this you can write this is low cost, and it has 27 input output lines, just like in your 8051 you have 32 IO lines or 4 8-bit port. Here you have 27 IO lines. As I already discussed that 8048 बहुत low cost IC, and it is used in your keyboard controller as a कीबोर्ड इंटरफेसिंग में ये यूज़ होता है. तो दिस इज़ योर फर्स्ट. इसमें से जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. रैम और रोम बहुत बार पूछे जाते हैं, सिर्फ इन तीन के. Then 8052. 8052 is the extension of 8051. And this is also very important question. Next slide में है the difference between 8052 and 8051. ये बहुत बार question पूछा जाता है. What is the difference between 8051? So 8051 is your, and 8052 the next extension of this, next version of 8051 microcontroller. So 4 marks when you need to write only 4 points for this. The first one is about the RAM and ROM. Third one is that event counter, and the fourth is cost. Only 4 points you need to write. जैसे 8051 में, now you first read the feature. In 8052 you have 8 KB of ROM, और इसमें 8051 में कितना है 4 KB. ठीक है, और here you have 8 KB. So this is your first difference as a ROM. Okay, next आपका क्या है, that is RAM. In RAM 8051, as you already know, it is 128 bytes, and in case of uh, ROM you have 256 bytes. Okay, and cost wise it is more costlier. 8052 is more costlier than 8051, and in this you have one extra 16-bit counter timer which gives you more flexibility. यहाँ पे एक काउंटर है, तो यहाँ पे you will have two 16-bit counters, and since the capacity is more, so you can run large program as compared to 8051. This point also you can add. So 8052 में you simply you can write if features is there in your exam, that it is a simple expansion of 8051. It has 8 KB onboard ROM and 256 onboard RAM. You can split and make 2 points, and it allows to write program write large program, and the cost of 8052 is more than 8051, and it has one extra 16-bit counter. So this you can write in your exam. Next is one more family is there, that is 8031 and 8032. So in this 8031 and 8032, this is actually without ROM. ये जो फैमिली है ये किसका है, सेम है. लाइक 8031 is same like 8051, and 8032 is same like 8052. This is same, but the difference is that they do not have onboard ROM. तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगा, एंड दे में यूज एक्सटर्नल ROM फॉर प्रोग्राम मेमोरी. तो इसलिए हम इसको ज़्यादा करके कहाँ पे यूज़ करते हैं, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में, और प्रोटोटाइपिंग करनी हो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं. मीन्स कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, टेस्टिंग करना हो, वो सब आप उसमें कर सकते हो, राइट. Yes, you can add, Shishit, but this is least important, but you can add, no problem. But in 4 marks question, you need to write 4 points properly: RAM, ROM, cost,
and event counter and the larger program you can run, and you can also write that it is extension of um, 8051. Okay, so 8031 and 8032 जो है that is also the same like 8051 and 8052 but without ROM. Okay, नाउ 8052 AH बेसिक, तो ये जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसमें जो प्रोग्रामिंग आप करते हो माइक्रो कंट्रोलर में, फॉर दिस यू आर यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यू कैन यूज़. तो 8052 जो है इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ 8052 8052 AH बेसिक, where you can or the programmer can use basic. Basic, you all know that it is a programming language for writing instruction rather than using assembly language. So these are basically the different types or the family of 8051 microcontroller. So this question is important. RAM and ROM size आपको सबका मालूम होना चाहिए. स्पेशली 80484950 में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रैम एंड रोम. और उसके बाद 8052 और 8051 का डिफरेंस. तो दिस यू कैन सी आई written here also that it is 4 KB bytes, it is 8 KB bytes on board ROM or EEPROM. Anyone you can use 128 bytes and here 256 bytes. Here you have a dual 16-bit timer counter and here you have extra 16-bit timer event counter. Cost is less, cost is more, and here used in high volume application and allows to write large program larger than 8051. So these are the difference, and you can write the extension also. That font also you can add. Next is one more important question from this chapter, that is memory mapping of 8051 microcontroller. Memory mapping means how you have divided your memory. As you all know that we have 64 KB external memory, up to 64 KB external memory we can access. Why? Because it has 16-bit address line. ओके, तो कैसे हम मेमोरी को डिवाइड करेंगे, यू कैन सी दिस डायग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी. प्रोग्राम मेमोरी इज़ योर रोम एंड डेटा मेमोरी इज़ योर रैम. तो प्रोग्राम मेमोरी का कैसे मेमोरी मैपिंग होता है कि एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. तो यू कैन सी if you are using completely external, so your address range starts from 0000 to FFFF. So this is up to 64 KB of external ROM or EPROM access. But if you want internal as well as external, so how the address is distributed? First is starting 4 KB address from 0000 to 0FF is for 4 KB internal ROM and EPROM. This is very important question, और इस question में एड्रेस के मार्क्स हैं. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स फॉर राइटिंग एंड 2 मार्क्स फॉर डायग्राम. और इफ यू आर नॉट राइटिंग एड्रेसेस यू विल लूज 1 मार्क. एड्रेस के लिए 1 मार्क ये लोग देते. 1 marks means it is compulsory to write. If you are not using or writing that addresses, तो 1 मार्क सीधा कट जाता है. तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर एड्रेसेस कि कहाँ से कौन सी मेमोरी स्टार्ट हो रही है. तो 0000 to 0FF is 4 KB. That is for starting address is reserved for internal memory, and then from 100 to FF, next is 60 KB you are getting from external. So 4 KB external you cannot access, it's a waste. But if you want that complete outside memory, then the whole addresses will from 0000 to FF will go to the external 64 KB memory. Same way we have data memory. Abhi data memory we know we have only 128 bytes, right? तो 128 बाइट्स जो है वो कैसे एक्सेस हो रहा है, यू कैन सी हियर 128 बाइट्स जो है फ्रॉम 000 to 007F, दिस इज फॉर इंटरनल रैम.
And we have here SFRs, हम इनको बोलते हैं special function registers. So we have total 22 SFRs. ठीक है, तो register is also what? It is a storage place where you can store data temporarily. So here you have some special named register, just like in your 8085 आपके थे ना BCDEHL प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ऐसे ही यहाँ पे 22 रजिस्टर्स हैं जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, स्टैक के लिए, एज अ बैंक्स यूज़ कर सकते हो, मेमोरी बैंक्स। तो उनका जो एड्रेस रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 0080 टू 00FF। ये एक्चुअली पूरा 128 का कॉम्बिनेशन है, बट उसमें आप सारे 128 लोकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग ओनली 22 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ठीक है, एंड इफ यू आर एक्सेसिंग 64 KB तो इट इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड 0002 FFF। So you can use this external memory, you can use it as a ROM as well as you can use it as a ROM. Anyone you can use. Or if you are using with internal, then these combinations are there. So this way you have to draw this diagram as it is आपको draw करना है. It is of 4-mark question. We write about the memory mapping of 8051 microcontroller. So in this 8051 microcontroller, first you'll have to draw this diagram and then you have to write about a little bit theory. I have written much, but no need to write so much. But if you read, then at least you can write some points. तो जैसे मैंने बोला था कि प्रोग्राम मेमोरी क्या है, इट इज़ बेसिकली यूज टू write code or instructions in this, or it is permanent after writing, or it is done by manufacturer. After writing you cannot change it. तो इसकी टोटल कैपेसिटी 4 KB इंटरनल है, जिसका एड्रेस है फ्रॉम 0000 टू 0FFF. And if you want that completely access externally, then this pin you should know on this pin diagram, external access pin. If it is high, then it will be use the combo of internal as well as external. So it will first fetch the instructions from internal memory whose address is from this range 0000 to F0FFF. And if it is one extra ho gaya yahan par. And if the memory address exceed the limit, then it will fetch external memory from this room. And we have another way, if this EA pin must be connected to ground, and if it is pin is 0, then it will ignore the internal memory and it will completely access external memory. So that is about program memory. We have already discussed much about this. So data memory, as you know, it is basically used to store temporary data or intermediate results, and it is of 128 bytes. Along with this 128 bytes, you have 22 SFR special function registers, which is not the part of 128 byte. Another 128 byte may you will have these 22 SFRs that you can access. Okay, so this you need to write, this much you need to write for 2 marks. Okay, and this is about the interfacing. Externally आप उसको कैसे connect कर सकते हो as external ROM or RAM. So that also you can write little bit about external memory, that is already covered in the previous slide. Now next is you can see this is hardly कभी board में आया है, but still I have taken from your प्रकाश खिनाले book. So RD Supaker है ना एक और book जो है प्रकाश खिनाले, in that I have taken that pics. This is a memory mapping of 8048, 49 and 50 microcontroller. 48 में अभी आपको पता है अलग अलग है, दिस इज़ फॉर प्रोग्राम मेमोरी एंड दिस इज़ फॉर डेटा मेमोरी. तो मतलब तीनों का एक साथ दिखाया है. 8048 में कितनी मेमोरी है, 1 KB, एंड हियर द एड्रेसेस आर रिटन इन डेसिमल नंबर. तो 8048 1 KB मतलब 1024 लोकेशंस, राइट.
And 1024 location, if you start from 0, it will go up to 1023. So this is the memory mapping for 8048. Similarly, for 8049, you have 2 KB. So 2 KB means still 2048. So since you are starting from 0, so this is 2048 तक 8049. ऐसे ही 8050 के लिए 4 KB, तो 4 KB कहाँ तक जाता है? 4096. So 4096 means it's, since you are starting from 0, it will go up to 4095. So this is the memory mapping for 8048. Rarely ये question पूछा गया है, but फिर still you should know कि अगर बनाना भी पड़ा तो you should not miss this. क्योंकि ये जो questions हैं, ये chapter very small, but जो भी questions हैं, all questions are easy or direct. So you can you can write these questions. 8085 में अगर कहीं problem है, so instead of that you can write the questions from these chapters. Okay, and this is data memory of 8048, 49 and 50. तो आप उसमें देखोगे कितना था? 64 बाइट्स फॉर 8048. तो 64 बाइट्स में फर्स्ट 32 बाइट्स तो सबको कॉमन है, विच इज़ नथिंग बट दी डिफरेंट लेवल्स, रजिस्टर्स. these are not 22 SFR, these are registers जो कि उनके अपने वर्क के लिए हैं. बैंक्स बोलते हैं हम इनको, जैसे स्टैक के लिए एक यूज़ हो रहा है, और कुछ वर्किंग रजिस्टर है वे यू कैन स्टोर डेटा. और उसके बाद आप देख रहे हो तीनों का एक साथ यहाँ पे दे दिया कि इफ इट इज 64 बाइट्स तो 32 बाइट्स आर रिजर्व फॉर ऑल, वेदर इट इज 8048, 8049 और 8050, 30 to 31, and from 32 to 63 for 8048, from 32 to 127 for 8049, and from 32 to 255 for 8050. तो 32 अगर आप सब में से माइनस करोगे तो 64 में से 32 यूज़र एरिया है, ठीक है. एंड उसके बाद 96 बाइट्स फॉर यूज़र एरिया फॉर 8048 and 224 bytes for 8050. Understood? So this is program memory and data memory mapping for 8048, 49 and 50. So ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना, कभी आ जाता है क्वेश्चन तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट. And this is the architecture of 8051 microcontroller, and this is pin diagram. तो ये दोनों diagrams optional है. ऑप्शनल मीन्स कि सिर्फ ये तो बिल्कुल भी नहीं आता है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आई हैव टेकन और आई एम इंक्लूडिंग दिस वाई जस्ट टू शो द पोर्ट्स. मैंने बोला था यू हैव 32 पोर्ट्स, 32 bits IO line, and it is divided into 4 8-bit ports. So ये फिलअप का क्वेश्चन है जिसमें से पोर्ट 0 and port 2 is used for address and data buses, and port 3 जो है अपना सब receiving, transmission, read, write, status signals, interrupts उनके लिए यूज़ हो रहा है. और ये जो है for कम्युनिकेशन, इस पे जो भी आपको डिवाइस आप कनेक्ट करोगे उसके साथ रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पोर्ट 1 पे रहती है. तो दिस इज जस्ट पिन डायग्राम सेम लाइक 8085 40 पिन आईसी है, डिप पैकेज है. तो ये तो बिल्कुल भी आपका ऑप्शनल है, आपको करना ही नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ ऐड किया था. और ईए पिन दिखाने के लिए, एनेबल एक्सेस पिन और पीसीएन, ये दोनों पिन्स हेल्प करती हैं टू एक्सेस योर मेमोरी एक्सटर्नली और इंटरनली. द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल और फुली एक्सटर्नल वो इससे एनेबल एक्सेस से पता चलता है. तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. एंड आर्किटेक्चर ये आपकी बुक में भी दिया है, बट कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है आज तक. कितना ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए, ये बोर्ड में कभी भी पूछा नहीं है. बट फिर भी एक थोड़ा माइंड में रखो कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ हुआ है, बट कभी भी क्वेश्चन नहीं है. तो इन दिस सेम अगर आप देखोगे तो ये आपका ALU ऑर्गेनाइजेशन है. ALU में you have these accumulator and these temporary registers, okay,
एंड दिस इज योर पोर्ट एड्रेसेस. पोर्ट 0 और पोर्ट 2 किसके लिए यूज हो रहे हैं, आज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सॉरी, पोर्ट 0 और पोर्ट 3, इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग. ओके. और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, जो प्रोग्रामिंग मॉडल आपको दिखती थी, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे यू हैव 22 SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. special functions registers, SFRs. So different 22, all are not mentioned, but some are जैसे pcon, power control, serial control, timer mode, timer control, ये सब use होते हैं. Okay. तो दीज आर ऑल 22 SFRs. और उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में यू कैन सी हियर enable access pin, ALE you are familiar, address latch enable, and PSEN is also related to enable access for memory access. These are oscillators. 12 megahertz की जो frequency है, here same like your X1 X2 pin in your 8085 microprocessor. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रैम इनबिल्ट है. तो ये 128 बाइट्स रैम अंदर ही है आईसी के. एंड हियर इट इज़ रोम, ये भी अंदर ही है आईसी के. और ये डिफरेंट काउंटर्स, प्रोग्राम काउंटर, पीसी इंक्रीमेंट, डीपीटीआर, ये भी रिलेटेड टू प्रोग्राम, मतलब सेम टाइप का एक काउंटर ही रहता है. तो it is not there in your syllabus, so I am not explaining much. But diagram थोड़ा सा माइंड में रखना. It is easy. Port addresses you can draw, RAM ROM you can draw, ALU organization you can draw, and this is timing and control signal also you can draw. The same 8085 से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड आर्किटेक्चर है, बट कभी भी ये बोर्ड में नहीं पूछा गया है. हार्डली इट इज़, हार्डली क्या, आई हैव नेवर सीन इन बोर्ड एग्जाम. बट फिर भी थोड़ा सा एक ध्यान में रखना. ओके. सो दिस टॉपिक इज ओवर. इन दिस मेन क्वेश्चंस जो हैं, आई हैव रिटन बोर्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. तो ये क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्टली एग्जाम में. 99% इफ आई कैन से these are the questions. What is microcontroller? For advantages of the same over microprocessor base. Give the application of microcontroller. 8 features of 8051 microcontroller. Difference between 8051 and 8052 microcontroller. लिस्ट ऑल microcontrollers of 8051 फैमिली. तो इसमें आपको सब लिखना है. 80484950, 805152, 8030 and 8031. And explain 8051 memory mapping for 8051 microcontroller with the help of neat diagram. Okay. Understood?